Okay, so as we are starting this first chapter, and as I said that the force is not a new thing which you all are going to study in this class, but the terms which you are going to study or the components which you are going to study, that is going to be a little bit new for you all. But the basic concept of this topic which we are going to discuss in this class, you had already come across in your class 8, if you remember about that. So we will understand it and we will discuss about those things. So let's start. So what are the things which we are going to discuss in this chapter? What are the things which we are going to study in this chapter? Even though this chapter is going to be a little bit easier than compared to any other chapter, and some calculations are there, so you have to be very mindful to about the calculations. ध्यान से टर्म्स को समझना है, अगर टर्म्स नहीं समझ में आएगा तो फिर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और टर्म्स के बेसिस पर समझना है कि फॉर्मूला को किस तरह से डिराइव करेंगे और फिर उस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोगों का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. So the very first topic which we will see in this chapter, that is the contact and non-contact force. Even though we know about contact and non-contact force, we had studied it in our previous classes also. Then we will go for a little bit about the Newton's law of motion. You all had come across the Newton's 3 law of motion, which you had studied in class 9th. क्लास 9th में जो तुम लोगों ने न्यूटन के तीनों लॉ को पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये न्यूटन के लॉस क्या हैं. वो तो पता ही है, बस उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे जोड़ने के लिए, फोर्स के साथ उसको रिलेट करने की हम लोग कोशिश करेंगे. फिर आगे हम लोगों को देखना है मोमेंट ऑफ फोर्स. ये हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. हम लोगों के लिए मेन टॉपिक जो इस चैप्टर का होगा वो यही होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स. तो हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे और फिर उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे. मोमेंट ऑफ फोर्स को तुम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कह सकते हो या टॉर्क ऑफ द फोर्स भी कह सकते हो. इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर में. फिर हम लोग लास्टली डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, किस तरह का होता है, वहां पर किस तरह से मोशन किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कि किस तरह से सर्कुलर मोशन होती है और वहां पर सर्कुलर मोशन में किस तरह की चीजें हैं. जैसे कि बेसिक सी बात जो इसमें तुम लोगों को पढ़ना है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इन सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो अगेन सम ऑफ द टर्म्स विल बी कंप्लीटली न्यू. कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो बिल्कुल ही नया होगा, बट कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो कि तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है. सो इफ यू हैड अंडरस्टूड अबाउट फोर्स, द लॉज ऑफ मोशन वेरी नाइसली इन योर प्रीवियस क्लास, if you had gone through all the topics in a very good way in your previous class or classes, then it would be easy for you all. But yes, I will not say that it is going to be very easy. Some of the terms which is regarding to the calculation, you need to be very careful about the topics and the terms. Because of that only you will be able to do the calculations, and if you will not be able to do the calculations, then you will not be able to get good marks also. So that is a very important thing. So let's see and understand about the topics. So over here, the very first thing which we are going to discuss, that is force. So what is force? At the very beginning of this chapter only, I had said this thing, that force is nothing new to you all. You know about force. When we come across, then we say about force that force is any kind of push or pull. That is obviously, that is the very basic definition which you had seen from your lower classes. But when you come across the effects of force, then you understand that it is a particular kind of a physical quantity or a physical tendency which makes the body rest to motion or motion to rest, or it can change the shape and size of the body, and those things can be done. तो जब हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये तो पता है कि फोर्स जो होती है वो एनी काइंड ऑफ पुश या पुल होती है.
जब भी किसी भी बॉडी में किसी तरह की कोई पुश या पुल काउज होती है तो उसको हम लोग फोर्स कहते हैं, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है जो अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के। तो बेसिक से 5 इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, जिसमें कि पहला इफेक्ट था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उससे वो मोशन में आ सकती है। दूसरा इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जहां पर कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। फिर तीसरा इफेक्ट हम लोग ये जानते हैं कि रेट ऑफ मोशन, यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके रेट ऑफ मोशन को हम लोग अल्टर कर सकते हैं। फिर फोर्थ हम लोग ये जानते हैं कि वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, हम लोग किसी भी बॉडी के शेप एंड साइज को बदल सकते हैं। फिर लास्टली हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी बॉडी को हम लोग उसके जो डायरेक्शन है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इन सब इफेक्ट्स को हम लोग फोर्स के रूप में देखते हैं। तो अभी जो हम लोगों को पढ़ना है या इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें हम लोग लास्ट टर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इफ यू रिमेंबर इन क्लास 9th while I was explaining you about the force, there also we had studied about the force, and over there I said that the first 3 components are going to be important over there। जब हम लोगों ने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था, तो हम ये सबको बताए हुए थे कि जो पहले 3 इफेक्ट्स हैं वो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब यहां पर हम लोग ये 5th इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि 5th सिचुएशन में डायरेक्शन की जब चेंजेस होती है, जब फोर्स अप्लाई करने से डायरेक्शन में चेंजेस आती है, तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, सो व्हाट इज दैट वन, सो दैट इज कॉल्ड टू द मूवमेंट ऑफ फोर्स। जब हम लोग फोर्स लगाकर किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो वहां पर हम एक पर्टिकुलर कंडीशन को क्रिएट करते हैं, उसी को हम लोग बोल सकते हैं एज अ मूवमेंट ऑफ फोर्स है। तो जब हम लोग फोर्स को क्लासिफाई करते हैं, जब हम लोग फोर्स को स्टडी करते हैं तो उसको बेसिक क्लासिफाई करते हैं एज अ कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सो इसके बारे में भी हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम बहुत डिटेल में इसको इलॉबोरेट नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग इसके बेसिक से चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे ताकि हम लोगों को ये याद रहे, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर तुम लोगों से पूछी जाती है तो तुम लोग उसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल नॉट गो फॉर अ ह्यूज or a very detailed explanation about the contact and non-contact force. Now, let's move to the next thing which we need to understand for the force, that is the SI unit of force. Whenever we are studying about force or any other kind of physical quantity, then we need to remember that we have to go for the SI unit also. Okay, the SI units are very, very important for us. Okay, and if we are not going through the SI unit, then we will not be able to understand that what kind of quantity we are referring to. Because when you had gone to class, when you had seen in class 9th, the first chapter was only there for the condition of the physical quantities. So just a minute, 1 minute, please. I have to drop a message. The student is joining this class. This is class 10th. Okay. So now, so as I was telling that whenever we are expressing any quantity, then we need to go for a proper SI unit. So in class 9th, you come across the first chapter where you had seen about the different kinds of physical quantities, and with that one, the different SI units or the CGS unit, and the where to use those units with their multiples and submultiples. All those things you had you know about it. So when we go for the force, then we also observe this thing that the force has the SI unit as Newton, and its CGS unit is called to be as the dyne. And when we
when we derive the second law of Newton, the Newton's second law, then we come across about the formula of the force also, where we used to say that force is equals to the product of mass and acceleration. So whenever we need to calculate the force, then we just go for the product of mass and acceleration. This you come across with the second law. So if you remember for that one, where you have seen that the force is directly proportional to the rate of change in momentum of a body. So we will see it once again. We will see it once again, as I had said in the introduction of the first, that we have to go for the laws of motion also. So there also briefly we will discuss about that. So the force is directly proportional to the rate of change in momentum of a body. And when we derive for this equation, then we come across about the formula of the force, where we see that force is equals to mass into acceleration. And with this only we come across the unit also. So when we are going for mass, its SI unit is kg, and when we are going for acceleration, then it is meter per second square. And when we combine these two components, we have the Newton. So these things we had already studied in our previous classes, so I don't think that there would be any kind of problem to understand it. Now, the next thing which I was explaining earlier, the different effects of force. What are the different effects of force? When we come across, then we see there are so many different effects of force, such as, for example, earlier when we had seen that when the force been applied, then we can change a body which is at rest. So if anything is at rest, we can change its state from rest to motion. We can also make the body stop. If a body is in motion, then due to applying force, we can stop it. Next, we know about this thing that the force can change the speed of a body, means it can change the rate of motion. So it can increase or it can decrease the rate of motion of a body. Next one, we know for this thing that the force can change the direction of a body, which we are going to study in this chapter. As I just now said this thing, that this is only going to be the important topic which we are going to deal in this particular chapter. So that is called to be as the turning effect, means when the force been applied, then we used to change the direction of a body, or we can cause a change in the direction of a body that will help us to do some kind of work. And the last one is that when the force been applied, then we can change the shape and size of a body. So these are the things which we can observe, and whenever force been applied on a body, then we can experience more than one kind of effect. Whenever the force been applied anywhere to perform any kind of work, we can observe that the force can be able to make the body in different kinds of changes. So it can be possible that we can observe more than one kind of situations which we had studied over here. तो ऐसा नहीं है कि जब force apply करते हैं तो सिर्फ कोई एक ही तरह का factor यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, एक से ज्यादा तरह के factor भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं. ठीक है? Now we will move to the next one, where we are going to classify the force. अब हम लोग force को थोड़ा सा classify करते हैं. And students, when I go for this specific thing of classifying the force, then these classifications are very important. देखो, जब भी हम लोग force का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों ने जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कई सारे टर्म्स पढ़े थे. जैसे कि एक टर्म बहुत कॉमनली हम बताते हैं जिसमें कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता था, वर्क डन. तो वर्क डन जो होता है, वो वर्क डन फोर्स के एप्लीकेशन के रूप में हम लोग देखते हैं. वर्क डन जो है वो वर्क डन फोर्स नहीं है, बल्कि वर्क डन फोर्स के एक एप्लीकेशन के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है. और जब भी हम लोग फोर्स के किसी एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं, फोर्स के किसी एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो हम लोगों को फोर्स के उनके जो डिफरेंट काइंड्स हैं उनको भी जानने की जरूरत होती है, और उस काइंड का जो पर्टिकुलर इफेक्ट होता है उसको भी समझने की जरूरत होती है. क्योंकि अगर हम लोग उस पॉइंट को नहीं समझेंगे, तो हम लोगों के पास जो कोई सामने दूसरा पॉइंट दिया हुआ रहेगा वो नहीं समझ में आएगा. क्योंकि इसको समझ सकते हो कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है. अगर बिल्डिंग ब्लॉक में नीचे की तरफ अगर किसी तरह का कोई कमजोर रह गया, या फिर नीचे में अगर कुछ नहीं रहा, तो ऊपर का कॉलम कुछ रहेगा ही नहीं. तो जब हम लोग किसी भी तरह के बड़े टॉपिक को समझते हैं, या किसी भी तरह के एलॉबरेशन या एक्सप्लेनेशन को समझना चाहते हैं, तो हम लोगों को उसके बेसिक से चीजों को समझने की काफी जरूरत होती है.
So over here also, when we are talking about this force, then we are classifying it. So जो तुम लोगों के बुक में ये वाला पोर्शन नहीं है, ये जो हम जो अभी बता रहे हैं, ये जो क्लासिफाइंग ऑफ द फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्टेंट एक्शन वेयर बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ये तुम लोगों के बुक में नहीं है, लेकिन हम स्टूडेंट्स को ये समझाते हैं, क्योंकि जब तुम लोगों को ये समझ में आएगा, तब तुम लोगों को इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स या इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. Even though this is not given in the book, then also I'm using this thing. Okay, so while I used to go to the class, at that time also I used to explain, and now also I will explain it, because this will help you to understand the equilibrium condition. ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग को इक्विलिब्रियम पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में क्या होता है, या कहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, इक्विलिब्रियम नहीं हो तो क्या होता है, उसको हम लोगों को समझने की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर रिजल्टेंट एक्शन भी समझना है. और न केवल सिर्फ इसमें, न केवल सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बल्कि इसके जो भी टर्म्स हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना कि फर्स्ट चैप्टर में जो तुम लोग कुछ टर्म्स पढ़ोगे, वो कुछ टर्म्स तुम लोगों को फिर चैप्टर 2 में भी हेल्पफुल होगा. तो अगर चैप्टर 1 में कुछ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स अगर क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर तुम लोगों को चैप्टर 2 में भी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो चैप्टर 2 जहां पर कि तुम लोगों को वर्क, पावर एंड एनर्जी समझना है, वहां पर प्रॉब्लम होगा. और फिर जब वहां पर प्रॉब्लम होगी, तो फिर तुम लोगों को मशीन्स में भी इस चैप्टर का यूज करना है. ये जो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में भी बताने वाले हैं, इसको हम लोग मशीन्स में भी यूज करेंगे. तो ये पूरा का पूरा जो यूनिट ही है, इसीलिए तुम लोग देखते होगे कि बुक में ये एक यूनिट के रूप में दिया हुआ है, फोर्स के रूप में. तो फोर्स को अच्छी तरीके से समझना है. अगर फोर्स में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है, तो फिर तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, सो प्लीज बी माइंडफुल फॉर दैट वन. सो जस्ट अ मिनट. So over here we are going to discuss about this thing. So first of all, we are going to see for the first kind or the first classification of force, where we are observing that on the basis of the resultant action, the force can be classified as the balanced force and unbalanced force. So resultant action, अब resultant action का मतलब क्या हो गया? तो सिंपल तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं, resultant action का मतलब कि जब फोर्स अप्लाई करने पर किसी तरह का एक्शन ऑब्जर्व होता है, किसी तरह का कोई फंक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग रिजल्टेंट एक्शन कहते हैं. जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ बॉक्स. ठीक है, मान लो कि फ्लोर पर एक बॉक्स रखी हुई है, एंड यू हैड पुश्ड इट. तुम उसको पुश कर रहे हो. सो इफ यू विल पुश इट, देन यू कैन चेंज इट्स पोजीशन. तुम उसके पोजीशन को बदल दोगे. तो अगर तुम उसके पोजीशन को चेंज कर पाते हो, then you will observe a resultant action, and according to the resultant action we can understand that we should go for a balanced force over there or unbalanced force over there. So that we need to clarify. So these are the things which we need to understand over here. So the very sorry students, I got disconnected. Let's continue. Okay, तो जैसे कि बता रहे थे कि बैलेंस फोर्स जब हम लोग कहते हैं, तो बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं? So when the force been applied from two different ends and they are equal in magnitude, which doesn't causes any resultant action, then that is called to be as the balanced force. जब दो तरफ से, दो अलग अलग एंड से फोर्स अप्लाई की जा रही है और उसके वजह से हमको दिख रहा है कि किसी तरह का कोई रिजल्टेंट एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे. सपोज फॉर एग्जांपल टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर का कंडीशन अगर दिया हुआ है, ठीक है, दो टीम्स फोर्स अप्लाई कर रही है. सपोज दिस इज ए टीम एंड दिस इज बी टीम. सो इफ ए टीम इज पुलिंग द रोप दिस साइड एंड बी टीम इज पुलिंग द रोप दिस साइड. So when they both are exerting equal amount of force, suppose for example this side 50 Newton of force and this side also 50 Newton of force been applied. So under that situation, we will observe or we will say that both the teams are exerting equal amount of force, hence there will be no resultant action. If you remember, while we were discussing about the work done, there also I had explained about this thing. So the resultant action is very, very important. So just a minute, I will explain with the white screen also. So over here, suppose for example, there is a box. Okay, there is a box on the floor and you had been asked to push it.
So this is say as U, A, which is pushing to that side. And another person is B, who is pushing just opposite to U. Now, if we go for the magnitude of force, this side, say as for example, it has been applied by 10 Newton of force. And from the other side also you are experiencing 10 Newton of force. So under this kind of situation, you will observe that the magnitude is same. So what you are going to see, do you will or you are going to observe that the box is going to change its position? No, the box is not going to be changing its position. It will remain at the same situation. Why? It is because it is experiencing equal amount of force. So there is no resultant action. So you can say that this is an equilibrium condition. Okay, because from both the end, the amount of force is equal. But if we say for unbalanced force, so what will happen over there? So if I will keep the same situation and if I will keep the same person also, but I change the amount of force, say as for example, I will go for like this, that this person means you, as I said that A is you are exerting 10 Newton of force, and from the other side, someone is there, that person is exerting 15 Newton of force. So the force which the other person is exerting is greater than to your force. And when it is greater than to your force, then we are going to experience a resultant action. Over here, under this situation, this resultant force will make the box move forward. यहाँ पे ये जो resultant force है, resultant force होता क्या चीज है? Resultant force is actually the difference between the two unbalanced forces. जब दो unbalanced forces आ जाती हैं, उसकी जो difference होती है, उसको resultant force कहते हैं. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 15 न्यूटन का एक फोर्स है और 10 न्यूटन का एक फोर्स है. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 5 न्यूटन का. तो 5 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो इस बॉक्स को ए साइड की तरफ मूव करवा दे. So that is the resultant force, and there we observe unbalanced force. So here we are getting unbalanced force, और unbalanced force के कारण हम लोगों को यहां पर अगर इस सिचुएशन में देखते हैं तो हम लोगों को एक मूवमेंट देखने को मिलता है. ठीक है. So please keep this thing in mind because this thing will help you to understand the condition of the movement of any kind of object which has been pivoted at a particular point, which we are going to see as a moment of force. जब हम लोग moment of force में पढ़ेंगे तो हम लोग इस चीज को फिर से वहां पे देखेंगे. वहां पर हम लोगों को बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स दोनों को ही पढ़ना है. तो वहां पर भी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग देखते हैं कि दो तरफ से इक्वल अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो वहां पर किसी तरह का कोई रिजल्टेंट एक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, यानी वो बैलेंस्ड हो जाएगा. लेकिन अगर दो तरफ से अलग अलग अमाउंट के फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं तो वहां पर हम लोगों को ऑब्जर्व होगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स बड़ा है जो कि एक रिजल्टेंट एक्शन को वहां पर परफॉर्म किया है. So this is the thing which you need to understand and remember also. So I hope that there is no problem till here because I'm going to see for the next topic over here. So here we are going to discuss about the types of force in the second part where we are going to see that how we can classify the force on the basis of its application. अब हम लोग यहाँ पे फोर्स को उसके एप्लीकेशन के बेसिस पर देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या किस तरह से उसको हम लोग अलग कर सकते हैं. और इनमें से कुछ पॉइंट्स को हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना भी है. ठीक है. तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आगे आने वाले हैं जिसको कि हम लोग एक एक करके समझेंगे. फिलहाल हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स में आते हैं जिसको कि हम लोग कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं. So when the force been applied on a body, जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पर उसके एप्लीकेशन यानी किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो उसके बेसिस पर हम लोग कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के रूप में उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं.
तो अगर हम लोगों को बोलना हो कांटेक्ट फोर्सेस या नॉन कांटेक्ट फोर्सेस तो कौन होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली न्यू टॉपिक है तुम लोगों के लिए, तुम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। सो कांटेक्ट फोर्सेस आर दोस काइंड ऑफ फोर्सेस वेयर वी यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट द फोर्स बीन एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी विद अ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। अगर किसी भी बॉडी में एक डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के बेसिस पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एज अ कांटेक्ट फोर्स, वो हम लोगों के लिए कांटेक्ट फोर्स हो जाती है। जबकि अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, अगर हम लोग थोड़े से डिस्टेंस से फोर्स अप्लाई करते हैं, देन दैट वुड बी कंसीडर्ड टू बी एज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। So contact force is a force which is applied or which we use to apply with a direct physical contact, whereas a non-contact force is a kind of force which we use to observe that it used to act without any direct contact or without any particular physical contact over there. So under contact force, we know for that one very common forces as the muscular force and the frictional force. But with that one, we have to come across some other forces also. And when we go for the non-contact forces, then very common ones or very rarely which we used to see, that is the magnetic force, electrostatic force, and the gravitational force. So out of this one, gravitational force, about the gravity we had studied in class 9th. In class 9th, we had studied about magnets also, but in class 10th also we have to study about magnets. Okay. So those things are there. So one by one, we will classify all these forces. So very first, we come for the contact force where we are understanding about the friction force. So as I said, I'm not going to elaborate a lot about these things. Slightly only I will explain. If you do have any doubt, you can ask me later on, because these things you had already studied in your previous classes. You know, I'm just going through this one so that you can recall those things and you can remember them out properly. And if you would have any doubt, you can ask me. I can explain it once again also. Okay, so let's go for that one, frictional force. So what is frictional force? So basically we can say this thing that frictional force is a kind of contact force which acts between two surfaces, which are in direct contact. And as the body used to be in motion or even though in rest, then the surfaces which they are there, they gets in direct contact, and because of this direct contact, we do observe a force used to act between the surfaces in the opposite direction, and that is called to be as the frictional force. So in simple language, if it has been asked to explain the friction force, you can say like this thing, that friction is the force that resists motion when two surfaces are in direct contact or one of them is in motion. Then we do observe that friction is present over there. And as you all know this thing, that the friction is due to the interlocking of the surfaces. When two surfaces gets interlocked with each other, then the friction force used to be there. So if the surface is having very rough structure, then there would be more friction force. And if the surfaces are having low structures, sorry, the low roughness, then the friction will be less over there. And you know about the friction as the static friction, dynamic friction, and the rolling friction. So all these things you come to know about in your previous classes, or you had studied it. I think in class 6 you had seen that. And again in class 11th you have to study all those things which we are going to see over here. If you will study physics, again in class 11th there will be there, those things will be there, and more classification, more formulas, and more theorems will be related to that, and calculations will be also there. Now the next component which we are going to see over here, that is the normal force. Okay, normal force or normal reaction force. Now before I go for this normal force, I would say this thing. The word normal which has been used over here, it is just for been the just to show perpendicular. Okay, remember this thing, perpendicular. This normal word is used to show
परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलरली कहीं पर फोर्स अप्लाई करने की बात आती है तो वहां पर हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इफ यू रिमेम्बर, हम लोग जब पिछले क्लास में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बॉइंट फोर्स के बारे में पढ़ा था। बॉइंट फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बॉइंट फोर्स को भी हम लोग नॉर्मल फोर्स के रूप में काउंट करते हैं। जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं बॉइंट फोर्स इज काइंड ऑफ अ नॉर्मल फोर्स। क्यों? क्योंकि वो भी परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। फिर जब हम लोगों ने प्रेशर पढ़ा था तो प्रेशर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्रस्ट। एक वर्ड आया था या टर्म आया था थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? वो भी परपेंडिकुलर फोर्स है। वहां पे भी तुमने देखा था कि नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। तो क्यों उसको नॉर्मल फोर्स कहा जाता है? क्योंकि वो नॉर्मली एक्ट करती है इन अ परपेंडिकुलर फॉर्म और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी वजह से इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द फोर्स विच वी यूज टू अप्लाई डायरेक्टली ऑन द सरफेस in a perpendicular manner to observe a reaction or to experience a reaction, that is called to be as the normal reaction force. So जब भी हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉमन सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो तुम लोगों की बुक में भी दी हुई होगी कि एक बुक को रखा हुआ है टेबल के ऊपर। तो देखो, जब इस बुक को हम लोग इस टेबल के ऊपर रखते हैं तो ये बुक टेबल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से, और इसको अपोज किया जा रहा है थ्रू द टेबल इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो दैट इट कैन बैलेंस द कंडीशन, सो दैट इट कैन मेंटेन द सिचुएशन। और इसी कंडीशन को या इसी सिचुएशन को हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं एज अ सिचुएशन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको हम लोग एज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के रूप में जानते हैं और पढ़ते हैं। So this you need to remember. So when we go for the reaction force, then we can say as whenever the force been applied on a particular body to experience an opposite force or equal and opposite force, which we had already studied in the Newton's third law also, that is called to be as the reaction force or the normal reaction force. Okay. Do anyone is having any problem till here? Yes, students, if anyone is having any doubt, I don't think so that till here any kind of problem would be there. But then also, if there is any problem, yes, no. सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में फोर्स परपेंडिकुलर ही होगा, इसका कोई प्रूफ? अच्छा, देखो, अब नॉर्मल फोर्सेस के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं परपेंडिकुलर सिचुएशन। लेकिन परपेंडिकुलर सिचुएशन का मतलब ये नहीं कहेंगे कि ये हर समय जो है वो एकदम परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ ही लगे। ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में भी लग सकती है, और वहां पर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक वॉल है और उसपे एक हुक लगी हुई है, और उस हुक से एक रस्सी टंगी हुई है, और तुम इसको खींच रही हो, दूसरे एंड से तुम उसको पुल आउट कर रही हो, उसको पीछे की तरफ पुल कर रही हो। जैसे तुम उसको पुल करोगी, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल सी दैट द रोप गेट स्ट्रेच्ड अप, वो एकदम स्ट्रेच हो जाती है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं इस वॉल से लगने वाला फोर्स, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि ये रोप इसको खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वॉल जो है वो वॉल एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है दूसरे तरफ, तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये इसी सिचुएशन में है कि एक बुक को टेबल पे रखेंगे तभी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर प्रूफ तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं और हम लोग उसके अगेंस्ट में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं एज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कई सारे जगहों पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब तुम अपने स्कूल बैग को उसके हैंडल से पकड़ के उठाती हो, तब भी तुम वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही हो। जब उस स्कूल बैग को तुम अपने शोल्डर पे रखती हो,
तो बैक के वेट के कारण वो नीचे की तरफ जाना चाहता है, लेकिन शोल्डर वो ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब तुम एक पेन को पकड़कर लिखती हो, जब एक पेन है या पेंसिल है तुम्हारे हाथ में, उसको तुम पकड़ी हुई हो अपनी उंगलियों से और तुम उससे लिखने की कोशिश कर रही हो, तो तुम अपने उंगलियों से उस पेन के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती हो, और पेन का सरफेस भी एक अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसके कारण एक प्रॉपर ग्रिप बन पाता है, और उस ग्रिप के कारण तुम वहां पर लिख पाती हो। तो वो सभी जगह पर वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही कहलाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के अंदर ही